Hello, good afternoon. Welcome to CAC Science. This class was scheduled at 10 o'clock. I understand that, but then there were some kind of electrical difficulties. Electricity cut off from the morning. There were some kind of work undergoing, so we had to postpone the class 12 o'clock. So, ସେଥିପାଇଁ এই class ଟାକୁ postpone କରାହେଇଥିଲା and then some kind of restoration program ଚାଲିଛି. So, ସେଥିପାଇଁ এই class ଟା delay ହେଲା. Otherwise else, every day you will have this class Prastuti at 10 o'clock. By chance, technical difficulties jogu aji tamu class 12:30 re start hala. But then, nonetheless, good afternoon. Nonetheless, we will be starting the series from science and tech. Correct? If you have your environment and science and tech on this particular day, माने Thursday रे तमरो either environment नहले science and tech हवा कथा. आजी science and tech हबो. Next week को तमरो environment ऊपर questions आसीबो. So all of these questions will be discuss करिबा आजी questions को. But before getting into the questions, I will be letting you know that कि ए आजी कार questions गुडा को देखा जीवो difficult. The questions are based on basically science and tech जदी current affairs रे अछि in the last year 2025 ରୁ 2026 भितरे बहुत सारा questions अछि. तो जति भी science and tech development हेछि सेही ऊपर questions focus करके अछि. You will have to answer the question looking at the options. Options को देखिबो, eliminate करे चेष्टा करबो आ आंसर करे चेष्टा करबो. Questions टिके lengthy अछि. बहुत सारा क्वेश्चन टिके लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड भी अछि. आई हैव गिवन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो दैट गुटे ओवरऑल कवरेज हमको मिल जिवो. बहुत सारा दिन सब भितर डिस्कशन करबा हला. तो सेहि पय ए क्वेश्चन गुडा अछि देखि कि डरिबो नाही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिया को चेष्टा करबो. Just a second. So we will start with the question hela. एटा तो टेलीग्राम चैनल आई बिलीव समस्त जॉइन करि सारथिबो. ए पीडीएफ टा जहां भी एठी मु लिखिबी मु बे ए टेलीग्राम ग्रुप रे ही पकेबी. तो कैक साइंस रो टेलीग्राम चैनल रे पीडीएफ पढि जिवो. You will find all of the solutions there, right? So we'll begin with this session. I hope all of you have gone through some of the important news and current affairs. ता सहित आउ कोन साइंस रो बेसिक दिनस अछि मु सेटा को ठीक डिस्कस करि करि नै कि जिबे हला. चलो beginning from the first question. Recently, the UK drug regulator sanctioned a gene therapy called Casgevy. Casgevy was the gene therapy that was regulated. That was basically sanctioned by the UK regulatory authority, drug regulatory authority, as a significant breakthrough for treating sickle cell disease. Sickle cell anemia भी कुहा जाए, and thalassemia. Thalassemia basically blood transfusion ऊपर depend करंती. सेटा को thalassemia disease बोली कुहा जाए. Good afternoon मोनालिसा. तो thalassemia disease बोली कुहा जाए. एबे एई दीटा डिसीज पई Casgevy बोली गोटे ड्रग थेरापी इंट्रोड्यूस करा हेछि. एटा कोन आ ता रिगार्डिंग किछटा स्टेटमेंट्स को फॉलो करो बोली से कहू. First statement is saying sickle cell disease is a genetic blood disorder characterized by an abnormality in platelets. Platelets रे गोटे abnormality हेइथिबा जोकु sickle cell disease हुए आ सेटा genetic disorder बोली से कहूची, right? Second statement कोन कहूची? Second statement कहूची the sickle cell disease causes red blood cells to adopt a sickle or crescent shape. आमे आइडेंटिफाई करि पारुथुबा जे जदि sickle cell disease कुहा जाउची ताले से नेम रो किछि ना किछि रेगुलेशन थिबो, माने से नेम रो किछि ना किछि वैल्यू थिबो. तो सिकल सेल डिजीज जेहेतु ब्लड सेल सिकल शेप रे कन्वर्ट हे जाउतबे सित पे हेतबो. वी कैन आइडेंटिफाई. आई विल डिस्कस द क्वेश्चन. ओके, अच्छा 1 and 2 ओनली. ठीक अछि. Hemoglobin is the protein responsible for carrying oxygen in red blood cells. Hemoglobin is the protein which is responsible for carrying oxygen in red blood cells. You have given the answer. Fatafat 1 and 2 दे छ मोनालिसा. Anyone else who want to answer? If you want to answer किछ असुविधा नाही, but then I will be discussing also. काइना there are 25 questions, lengthy questions अछि. टाइम टिके लागेबो तो मु साइड बाय साइड डिस्कस भी करि चाहथुबी. हला तमे भी आंसर देई चलो, किछ असुविधा नाही. किंतु काली जेमते हमें मॉडर्न ओडिसा हिस्ट्री रो डिस्कशन करथले सेमिति माने I will not giving you more time to answer the question. हला देखो सिकल सेल डिजीज माने कोन? बेसिकली रेड ब्लड सेल्स एमति रहिबा कथा, करेक्ट. किंतु रेड ब्लड सेल्स एमिति न है कि कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हुए नाही, एंड दिस टेक ए पर्टिकुलर क्रेसेंट शेप. गोटे क्रेसेंट शेप माने कोन? एमिति फॉर्म रो शेप रे हाफ डेवलप्ड होंती, एंड दैट इज व्हाई एटा गोटे सिकल शेप. माने सिकल माने कोन? दा बेसिकली जोथरे तमरो धान कटा जाय दा हला ते दा भलिया शेप नियंती आ सेति पय सेटा को सिकल सेल डिजीज कुहा जाय. Complete red blood cells develop he paranti nahi, and this is a genetic disorder. Yes, this particular statement is correct, but then they कहूची by an abnormality in the platelets. Platelets are not responsible
फॉर दी सिकल सेल डिजीज कौन पाई हुए जदि रेड ब्लड सेल्स रो एई फॉर्मेशन आसे सेति पाई सिकल सेल डिजीज हुए प्लेटलेट्स बेसिकली तमरो ब्लड क्लॉटिंग पाई इंपोर्टेंट तो प्लेटलेट्स रो कौन सी प्रकार रो संबंध सिकल सेल डिजीज सहित नाही त माने प्लेटलेट्स इज नॉट कंसर्न्ड विथ द सिकल सेल डिजीज एठी कोन हेबा कथा एठी आरबीसी होबा कथा रेड ब्लड सेल्स रे डिफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेटमेंट कोन हे गला भूल हे गला सेकंड स्टेटमेंट सिकल सेल डिजीज कॉजेस रेड ब्लड सेल्स टू अडॉप्ट ए सिकल और क्रेसेंट शेप ए स्टेटमेंट ता इन जनरल ट्रू होबा कथा सिकल सेल रो नाटा सेउतु नहीं आसे थर्ड स्टेटमेंट कोची हेमोग्लोबिन इज द प्रोटीन रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल्स बेसिकली एटा को प्रोटीन देखि कि समस्त भूल करंती बट हेमोग्लोबिन इज एक्चुअली बोथ ए पिगमेंट एंड ए प्रोटीन तो हेमोग्लोबिन टा गोटे पिगमेंट भी आ प्रोटीन भी ठीक तो सेति पय दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट मेटालो प्रोटीन बोली कहा जाय सेरा गोटे वास्कुलर प्रोटीन जोटा कि एब्जॉर्प्शन पय यूज हुए ठीक तो सेति पय एटा कोन हे जिवो बोथ से 2 and 3 आर करेक्ट but then I will also tell you something important about this particular Casgevy process ये जो Casgevy process अछि एटा गोटे CRISPR-9 टेक्नोलॉजी यूज करे CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी यूज करे ए बेसिकली CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी टा कोन CRISPR ता गोटे नुवा टाइप ऑफ जीन मॉडिफिकेशन रो सिस्टम डेवलप करा हैछि जार फुल फॉर्म होछि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज करके कोन जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करा जाए माने जो जीन रे मैन्युफैक्चर ऑफ सिकल सेल रो डेवलपमेंट हुए तो ए क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी Cas9 इज बेसिकली ए प्रोटीन तो से प्रोटीन को माने क्रिस्पर एसोसिएटेड 9th प्रोटीन तो से प्रोटीन चेन को तमरो जेनेटिक सेल्स रे माने स्टेम सेल्स को बाहर करा जाए गोटे मनुष्य भितर से स्टेम सेल्स को बाहर करके सेथरे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा जाए एंड देन सेटा को रीइंट्रोड्यूस करा जाए पेशेंट्स में को पेशेंट्स पे 12 इयर्स प्लस रो पेशेंट्स पे ए पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज करा जिवो जो थरे कि तांकर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके डिजीज ताको एराडिकेट कर दे पारिबे किन बा तमरो डिजीज को ट्रीट करि पारिबे बोली कहा जाय बोथ द डिजीज ऑफ सिकल सेल एंड थैलेसीमिया आर ट्रीटेड थ्रू दिस प्रोसेस तुमको बेसी माने इन डेप्थ जानिया दरकार नाही जे क्रिस्पर कोन Cas9 टेक्नोलॉजी कोन आरएनए मॉडिफिकेशन आ डीएनए टा को केमती एलिमिनेट माने जे डीएनए मॉडिफिकेशन केमती होय आरएनए टा को सप्रेस जो आरएनए टा को यूटिलाइज करंती आरएनए यूटिलाइज करके डीएनए मॉडिफिकेशन केमती आनुचंती एते डिटेल तो तुमको दरकार नै इफ देयर इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन मेंस रे जदी एमती क्वेश्चन आसे ताहाले यू हैव टू राइट समथिंग बट एवरीथिंग इज गिवन इन द मैगजीन जो करंट अफेयर्स आसे से करंट अफेयर्स रो मैगजीन रे सब प्रकार रो डिटेल्स दिया हेते ता भितरु हमको बेसिक फंडामेंटल दिनस जानि कि मेंस रे लेखिवार अछि प्रीलिम्स पय इट इज इजी यू कैन फाइंड आउट द आंसर माने प्रीलिम्स पे तुम एलिमिनेट करके भी आंसर पाई परिबो राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड एड्स डे 2025 was observed on 1st December consider the following statements HIV primarily attacks the immune system by destroying CD4 cells CD4 cells कोन these are basically the T cells को जोटा तमरो माने इम्यूनिटी बूस्ट करिया पे यूज करा जाय से CD4 cells are basically that particular cells then HIV रो फुल फॉर्म ही कोन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हला तो इम्यूनो डेफिशिएंसी माने कोन इम्यून सिस्टम को डेफिनेटली इफेक्ट करूची सेति पय ता डाटा होची इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ठीक तो इम्यून सिस्टम को से अटैक करूची आ सेही सिस्टम्स को अटैक कर सला परे से निजो को रेसिप्रोकेट करे आ सेति पय फर्स्ट स्टेटमेंट सेही जिंसटा को ही डिस्क्राइब करूची बेसिकली वीकनिंग द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स बॉडीज डिफेंस सिस्टम को वीकन कर HIV can be transmitted through casual contact such as hugging or sharing utensils with an infected person. A statement टा समस्त को जनाथिबा दरकार. There were lot of campaigns running by the government. बहुत सारा campaigns run करथिला ए दिन को identify करबा पई. आ ए दिन सर न्यूज़ टा लोगों को पाकर पहुंचेबा पई जे HIV casual contact रे स्प्रेड हुए नाही. यदि infected syringe, infected blood transfusion, sexual contact ए थ्रू रे ही HIV ट्रांसमिट हुए. Then lifelong antiretroviral therapy effectively controls the virus although there is currently no cure ता माने कोन एठी हे गेला सेकंड स्टेटमेंट ता तो इन जनरल भूल हे गेला क्वेश्चन केते लेंथी अछि हमको मतलब नाही थरे पढिले तमे जानि जिवो जे सेकंड स्टेटमेंट ता भूल अछि आ जदी सेकंड स्टेटमेंट ता भूल अछि कोन हे जिवो आंसर 1 and 3 is correct नमस्कार कुमार परफेक्ट अरे बुझि पालो ना नाही तो सेति भाई स्टेटमेंट ता तुमको देखिबा सेमते लागुची ता परे ए जो CD4 सेल्स आ HIV सेटा तुमको
बुझिबा किछि आवश्यकता भी नाही. If you don't want to understand also, no problem. Question और answer solve करियार अछि, we have to get to the answer. Simple question पढिबार अछि, analytical analysis करिवार अछि and answer पाखरे पहुंचबार अछि. Clear? Indian researchers discover Alaknanda, a well-structured spiral galaxy. जेमती आमरो गैलेक्सी को कोन आमरो बेसिकली मिल्की वे गैलेक्सी को जाय. ए जो मिल्की वे गैलेक्सी को जाय तार नाटा होची मंदाकिनी बेसिकली. तो मंदाकिनी रो सिस्टर रिवर अलकनंदा और तेत पे बेनुआ गैलेक्सी जोटा डिस्कवर करा हला तार नाटा अलकनंदा रखा हला. बेसिकली ए अलकनंदा को जो डिस्कवर करा हला जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड. टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस telescope use करा हेतला and then एटा को discover करा हेतला. It is somewhere around 30,000 light years ahead of Milky Way galaxy. माने आमो light years आमो galaxy to 30,000 light years दूर रे अछि. एबे light year तो definitely समझते जानि थिबो, but this particular discovery was done by National Center for Radio Astrophysics. But then we'll go with the statements first. Galaxies are massive systems of stars, planets, gas and dust bound together by gravity. Correct? All galaxies contain a supermassive black hole at their center. सब galaxies रो center रे गोटे supermassive black hole अछि बोली. The Milky Way galaxy is a part of the local group which belongs to the Laniakea supercluster. Laniakea supercluster को belong करे. नमस्कार पंचानन. Which of the following statements are correct? से दिन सरा question पचारो. Right? Good. Very well. Galaxies are massive systems of stars, planets, gas and dust bound together by gravity. Yes, this statement is correct. सेथुरु ही गैलेक्सी तयारी हुए जोथरे कि स्टार्स, प्लैनेट्स माने तमरो डस्ट, ग्रेविटी और एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स सब दिन से भितरे इंक्लूड हेकी थाए एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. Second statement, all galaxies contain a supermassive black hole at their center. All massive galaxies contain a super black hole. Okay. Very good. All is an extreme statement. तो सबु galaxies रो मझिरे गोटे black hole थाए सेमिति conditions compulsory नुहे. किसिटा small galaxy system अछि जोथरे कि black hole रो availability न थाई पारे. तो सेति पई सबु galaxies मझिरे black hole अछि बोली से statement ता कोन हे जिवो भूल हे जिवो. The Milky Way galaxy is part of the local group which belongs to the Laniakea supercluster. Yes, this statement is true. Laniakea supercluster is popular और तार गोटे पार्ट रे मिल्की वे गैलेक्सी अछि सेमति तमरो पांडोरा क्लस्टर भी अछि. पांडोरा क्लस्टर भितरे you will definitely found different kinds of माने stars and planets. एई जो अलकनंदा एबे डिस्कवर करा हेछि सेटा को स्टेलर फायर बोली भी कहया जाय. ता माने एई अलकनंदा मिल्की वे गैलेक्सी माने सॉरी नॉट मिल्की वे अलकनंदा गैलेक्सी रे स्टार्स माने definitely somewhere around every day 63 to 64 stars are being performed माने generated. That is why it is called as a stellar fire. आ एथरे को टेक्नोलॉजी को टेलीस्कोप यूज करा हेतला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूज करा हेतला. एती दिन से तुमको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे मन रखियार अछि. बाकी डिस्कवरीज ऑफ द स्पेस टेक एंड एस्ट्रोफिजिक्स सेंटर्स रे जदी क्वेश्चन आसीबो बेसिकली एटा नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा डिस्कवर करा हेछि एनसीआरए टीआईएफआर बोली कहया जाय. तो एनसीआरए टीआईएफआर विषय जदी क्वेश्चन आसीबो देन इट इज वेरी रेयर सेगमेंट रे क्वेश्चन आसी पारे. अदरवाइज एल्स ऑल ऑफ दीस स्टेटमेंट्स को एनालाइज कला परे कोन आंसर मिल जिवो. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग 1 and 3 ओनली. क्लियर. किछिना बेसिक दिन से ही जानिबार अछि तुमको माने आउट ऑफ द एंटायर सेगमेंट. तो जदी करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक कथा कहबा तुमको किछिना बेसिक दिन से ही जानिबार अछि. यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ द साइंस एंड टेक. ठीक. नेक्स्ट ए विषय रे आई हैड टेकन ए क्लास रिसेंटली. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट न्यूज़ काहे कि ना एथि रे हमरो कोन हे गला modular reactors ऊपर क्वेश्चन आसी. But this was the last year news, December news la modular reactors. एई वर्ष April 6 2026 रे something else also happened. Fast breeder reactor India criticality achieve करथिला. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ए fast breeder reactors, nuclear reactors can be an important segment in this upcoming year examination रे एई दिनसटा important हे पारे. कोन अछि क्वेश्चन. US firm Clean Core Thorium Energy to introduce next gen anneal fuel for India's PHWRs, right? So India's PHWRs माने heavy water reactors हला. These are prototype heavy water reactors. मोइटा कहितली HWR heavy water reactor, LWR light water reactors, तापर आसी जिबा हमरो FBR fast breeder reactors. ए विषय रे हमें डिस्कस करिथिले. I had taken a particular class on that also.
the FBRs are the fast breeder reactors. अबे fast breeder reactors विषय तो एटा न्यूज़ नुहे न्यूज़ कौन कहूची US firm clean core thorium energy introduce करिवो anil fuel for India's heavy water reactors. Consider the following statements. Thorium 232 TH232 is fissile and can sustain nuclear chain reaction on its own. এটা first statement कहूची. Second statement कहूची thorium based reactors generate significantly less long lived nuclear waste compared to conventional uranium reactors. India holds a substantial portion of the world's thorium reserves and integrates thorium in its 3-stage nuclear program. A 3-stage nuclear program ta Dr. Jahangir Homi Babanka द्वारा devise करा हैतला in 1954, and that is basically the strategy of India in achieving nuclear clear energy or clean energy को achieve करे पे India utilize करूची. How India चेष्टा करूची limitless energy माने dependence upon the hydroelectric power plants, all the core power plants जेमती हमरो reduce होबो net carbon emission, net zero carbon emission रो target अछि India रो 2070 सुता तो सेति पई एई दिन सर डेवलपमेंट होची. आ आरी ही सेकंड स्टेज रे हमें पहुंचले अप्रैल 6 2026 रे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स क्रिटिकलिटी अचीव कला जते बेले सेकंड स्टेज रे पहुंचले. थर्ड स्टेज रे कोन हबो थर्ड स्टेज रे एई जो यूरानियम थोरियम 232 अछि थोरियम 232 रो अवेलेबिलिटी इंडिया पाखरे more than 25% of the entire world's reserve. पूरा वर्ल्ड रे जति रिजर्व अछि तारो 25% रु अधिका रिजर्व इंडिया पाखरे अवेलेबल अछि थोरियम 232 रो. बट इंडिया ताहाले न्यूक्लियर पाई काहे कि बाहर डिपेंडेंट अछि किबा एनएसजी ग्रुप न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप को काहे कि जॉइन करे चाहूची काहे कि ना ए थोरियम 232 टा बेसिकली इज नॉट ए फिसाइल मटेरियल. एटा तमरो फ्यूएल भले एक्ट करि पारे किंतु ता सहित प्लूटोनियम 239 और एल्स यूरानियम 235 करेक्ट ऐड करिया को पड़े ताहले जाय कि ये रिएक्शन करबे न्यूक्लियर चेन रे. आ ए रिएक्शन रे बेसिकली कोन हबो थोरियम 232 गुटे न्यूट्रॉन नै कि कोथरे कन्वर्ट हबो यूरानियम 233 रे कन्वर्ट हबो. आ यूरानियम 233 रे कन्वर्ट हे सरला परे ही एटा गोटे फिसाइल मटेरियल हबो. इंडिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स थ्रू रे ए दिनस को अचीव करिया पे चेष्टा करूची सो दैट इंडिया को आ कहारी ऊपर डिपेंडेंट हवा को पड़िबो नाही. थोरियम 232 को यूज करके यूरानियम 233 रे कन्वर्ट करि सरला परे आमे सेटा को निजर फिसाइल मटेरियल रे कन्वर्ट करि परिबा. तो सेट बाय फर्स्ट स्टेटमेंट कोन हे जिवो एटा सस्टेनेबल नुहे. Thorium 232 is basically can be used as a fissile, but it is fuel material, but it is not fissile and cannot sustain nuclear chain reaction on its own. बाकी जदि स्टेटमेंट 1 भूल हे गला सेकंड स्टेटमेंट कोन कहूची थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स जनरेट significantly less long lived nuclear waste. this statement is true. यूरानियम रिएक्टर्स अपेक्षा थोरियम रिएक्टर्स रे माने न्यूक्लियर वेस्ट जोटा रिएक्ट जोड़ा जेनरेट हुए सेटा टिके सिग्निफिकेंटली लेस लॉन्ग लिव अल्प टाइम पे सेटा रेडिएशन रहे. इंडिया होल्ड्स a substantial portion of the world's thorium reserves. ए दिन से मैं कहली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्लियर. धीरे धीरे समस्त आंसर आसीबा बंद गेला. अरे किछि तो अटेम्प्ट करो टेक एन अटेम्प्ट आंसर आसु न आसु ए 1 2 1 3 जहां फील होची टाइप दी आंसर भूल हलो कोन हला. there is no issue if you get an answer wrong here. If you get an answer wrong in the examination hall, then that will be an issue. तो मन रे जहां भी डाउट्स अछि कि धर मन करो जहां भी तुमको आसुची ट्राई टू अटेम्प्ट इट तापर तमे भी जानिबो जे नाही मु जहां भाबुथली सेटा काहे कि भूल हला आ एक्चुअली आंसर कोन होबा कथा सेही दिन सरे माइंड रो एनालिसिस हले से क्वेश्चन ता मने रहिबो. माने इफ यू बेसिकली सी द आंसर एंड देन क्वेश्चन देखुचो तापर आंसर की देखुचो तेतरे बेसी बेनिफिट हुएनी. व्हेन यू एनालाइज द आंसर जतो ओटा अटेम्प्ट नै थिलो सेटा भूल हे जायतला तापर ही से आंसर ता तुमको बेसी दिन पे मने रहबो हला. तो स्टार्ट अटेम्प्टिंग द आंसर. डू नॉट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग. नेक्स्ट किजरा इजी क्वेश्चन भी आसीबो हला माने एबे स्टेटमेंट बेस्ड चलची किजरा शॉर्ट क्वेश्चंस भी नै कि आसीची. तो डोंट वरी अबाउट दैट. यूएस प्लान्स टू डिप्लॉय स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ए से निंचा हला से न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऊपर बेस्ड करथिला तो ए तरह न्यूज रे थिला. एसएमआर डेवलप करिया पे यूएस डेफिनेटली गुड फॉरवर्ड स्टेप नैची. एसएमआर ता कोन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बोली कहा जाय. ए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कोन पे डेवलप करा हेची. ए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बडा को डेवलप करा हेची जोथरे कि जो फिसाइल मटेरियल हमरो न्यूक्लियर रिएक्टर्स रे यूज हुए से फिसाइल मटेरियल को आउट टिके एनरिच करा हबो हला. आउट टिके एनरिच करा हबो ता माने कोन बेसिकली यूरानियम रो जो एनरिचमेंट थाए फिसाइल मटेरियल रे लेस देन 5% रखा जाय. किंतु एठी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स रे कोन करा हबो द एनरिचमेंट विल बी फ्रॉम 5% टू 20% एनरिचमेंट करा हबो. आ जेहेतु फिसाइल मटेरियल ता एनरिच करा हबो ए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ता
फ्यूएल एफिशिएंट रहिबे ए फ्यूएल को से माने बहुत वर्ष पर्यंत यूटिलाइज करि परिबे समवेयर अराउंड 3 to 7 years राइट किछिटा एमिति स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी डिवाइस करा होची जो गुडाक somewhere around 10 years पर्यंत भी गति करबा पई सक्षम रहिबे एंड दैट इज व्हाई ए जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स रहिबे ए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को मून रे स्पेस रे अलग अलग जगह रे जोठी रेगुलरली चेंजिंग ऑफ फ्यूएल न दरकार पड़े सेठी यूटिलाइज करबा पई टारगेट रखा हैची सो से थ्रू स्टेटमेंट्स एसएमआरस आर कंपैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स with capacities up to 300 megawatt of electrical power 300 megawatt of electrical power either electrical power generate करि परिबो नहले thermal power generate करि परिबो 300 megawatts of electrical power and can be factory built and transported for installation correct factory built हेकी ताकू transport करि परिबे सेति पई सेटा को small modular reactors कहा जाउची this statement is definitely true SMRs require refueling more frequently than conventional nuclear reactors ए जिनसटा full माने फॉल्स कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को वर्ष 2 वर्ष भितर रिफ्यूएलिंग दरकार पड़े एसएमआर ऑन द अदर हैंड लॉन्ग टर्म पर्यंत 3 रु 7 वर्ष पर्यंत बिना रिफ्यूएलिंग रे चली पारिबे एंड दैट इज व्हाई ए स्टेटमेंट टा भूल हे जिवो इंडिया एम्स टू डेवलप एट लीस्ट 5 इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड ऑपरेशनल एसएमआरस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दोस नेम विल बी भारत एसएमआरस को मैन्युफैक्चर करिया पई इंडिया बहुत ही आगो को डेवलप करिया को चाहूची आ इंडिया गुड नुवा टाइप रो फ्यूएल भी डेवलप करछि जार नाटा होछि ट्राइसो माने बेसिकली तमरो ट्राई स्ट्रक्चरल आइसोटोप मटेरियल फ्यूएल हिसाब रे डेवलप करे को चाहूछि एंड दैट इज व्हाई इट वाज देयर इन द न्यूज़ फर्स्ट स्टेटमेंट भूल हे गेला बोथ 1 and 3 आर करेक्ट तो एठी 1 and 3 तो देई नाही यू कैन नॉट अप्लाई द सेगमेंट ऑफ कोन माने एलिमिनेशन राउंड तो अप्लाई कर परिबानी बट दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि ओनली विल बी द आंसर राइट गुड Next, consider the following statements about quantum communication. Quantum communication has come into the field जो थे कि सीक्रेट मेसेजेस किंबा एनक्रिप्टेड मेसेजेस को जोटा को माने इंटरप्रिटेशन रु दूर रे रखिबा पई क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप करा हेची क्वांटम कम्युनिकेशन रो बेसिक कांसेप्ट होची जदी जणे माने सेंडर एंड रिसीवर भितरे कम्युनिकेशन चालीची सेटा को क्लोन करि परिबे नाही त माने धर एबे मोबाइल रे कथा होचे कि कॉल रे कथा होचे त एबे कोन गोटे पॉसिबिलिटीज अछि जे हम कॉल टाको केही गोटे टैप करिकि सुनि परिबे दीस आर दी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल जो थरे कि फोन क्लोनिंग हे परिबो किबा कम्युनिकेशन चैनल रो क्लोनिंग हे परिबो एंड देन से कम्युनिकेशन चैनल को टैप करिकि तमो कथा केही सुनि परिबे मिलिटरी सेगमेंट रे डिफेंस सेगमेंट रे ए दिनसटा बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सेति पई नुवा क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप हेची जो थरे कि बहुत सारा फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे की इंसर्ट करा हबो की इंसर्ट माने फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीकम्युनिकेशन चैनल भितरे गोटे की दिया हबो एंड दैट की वाज सम काइंड ऑफ फोटोन्स किछि पैकेज ऑफ फोटोन्स को ट्रांसमिट करा हबो आ रिसीवर ताको रिसीव करबो की जदी मैच करूची आ एरर देखो नाही डेटा रे ताहले कम्युनिकेशन ता स्ट्रांग अछि जदी बने करो ए पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को आउ केही सुनिबा को चेष्टा करूची किबा टैप करबा को चेष्टा करूची ताहले एठी जेतबे ये फोटोन्स पठेबे क्वांटम सेगमेंट रे कोन क्वांटम कम्युनिकेशन रे सब फोटोन सिमिलर स्ट्रक्चर रे रहिबे तो सिमिलर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल बैलेंस तांको भीतर रहिबो आ जदी बनकर ए सिमिलर स्ट्रक्चर न रहिला जदी के सब सम कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट करबा को चेष्टा करिवो ताहले ए दिन सरे एरर देखेबो देयर विल बी अ लॉट ऑफ एरर इन द डेटा एरर जेतेबेले देखेबो सेतेबेले को जणा पड़िबो जे क्वांटम कम्युनिकेशन माने ए जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन ता टैप होची के जणे ता भीतर सुनिबा को चेष्टा करूची तो एबे तबे मेसेज न पठेई पार तो ए की रे ही डिसाइड हे जिवो मेसेज पठेवार अछि कि न पठेवार अछि बेसिकली एथि पे क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप करा हेछि तो सेति पे इट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एंटांगलमेंट माने समस्ते सिमिलर स्ट्रक्चर रे रहिबे आ सुपरपोजिशन रो प्रिंसिपल यूज करा होछि एंड दिस इज पर्टिकुलरली करेक्ट ए स्टेटमेंट ता कोन अछि इट अलाउज फास्टर than light communication this is impossible light through रे जदी तमे कम्युनिकेट करूछो माने जेमति ऑप्टिकल फाइबर्स हमें यूज करूछे जोथले कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूटिलाइज करा होची जियो फाइबर हो कि तमरो एबे जो ऑप्टिकल फाइबर के लाइन आसुची सेथिरे टीआईआर यूज करा होची टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लाइट रो स्पीड रूट के कम स्पीड रे ही डाटा ट्रांसमिट करि परिबो लाइट रो स्पीड रू अधिका स्पीड रे के ही डाटा ट्रांसमिट करि परिबे दिस इज इम्पॉसिबल सेति भाई सेकंड स्टेटमेंट ता कोन हे जिवो भूल हे जिवो 1 and 2 is wrong आउ ताहाले कोन हे जिवो आंसर 1 and 3
It is immune to eavesdropping due to quantum principles. Quantum principles पाई eavesdropping करी हबो नाही, केही भी ए communication को tap करिके सुनी परिबे नाही, error show करिवो, and that is why this communication will be not available for others. That is how the quantum communication has been developed. आ सेति पे एटा बहुत न्यूज रे भी अछि, काहे कि ना एटा मिलिटरी एंड डिफेंस सिस्टम पे गोटे नुवा चैनल तयारी हबो. करेक्ट. ग्रेजुअली मुंड जाम हेकी चलिबो हला. साइंस एंड टेक रे एतिकी दिनस अछि बोली केही आइडेंटिफाई करी पारु नाहंती. पेपर 3 खराब हे गेला एथर सब पिलांकर. बेसिकली पेपर 3 खराब हे गेला बिकॉज़ द पेपर 3 वाज मोर ऑन साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स एंड डिफरेंट सेगमेंट ऊपर पेपर 3 आस्ता. समस्त खराब हे गेला कहू तर मेंस रे कम पिला क्वालिफाई हले बिकॉज़ पेपर 3 समस्त खराब हला एंड एवरीवन वाज नॉट एबल टू पास द पेपर. केमति पास हो? No one is interested to know about science and tech. In general, कौन OPSC Prelims रे science and tech रो बहुत कम क्वेश्चन आसे, 5 to 6 max to max, 7 to 8 questions max to max. हला तो सेति पाई science and tech पाई के इंटरेस्टेड न थांती, and in general science and tech is neglected. But एटा current affairs को भी relate करूची, सेति पाई हुए तो by chance current affairs segment रे भी science and tech रो देतनटा क्वेश्चन आसे. It will be important. You just have to identify. तुमको science and tech पढ़ी की पूरा सेतर पारंगम होवार नहीं. तुमको खाली आइडेंटिफाई करार अछि न्यूज़ टा ठीक अछि ना नाही, और न्यूज़ रिगार्डिंग रे ए न्यूज़ टा स्टेटमेंट वाइज करेक्ट अछि ना नाही. सिंपल. तो सही हिसाब रे इंडिया एआई मिशन एम्स टू बिल्ड सोवरेन एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया एआई मिशन हेथिबो माने डेफिनेटली सेटा इंडिजिनियस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करिया को चेष्टा करूथबो. आ जदी इंडिजिनियस एआई स्ट्रक्चर को बिल्ड करिया को चेष्टा करूथबो ताहले फर्स्ट इंडिया जो इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस रो स्टेटमेंट ता डेफिनेटली ठीक हेथिबो. ठीक. Second statement कहूची, it includes creation of large language models LLMs in Indian languages. Definitely AI टा यूज करे LLMs. जो इंटीग्रेटेड AI विषय में कथा होचे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा में कथा होचे, सेथिरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज करा जाए. एते एथि पाई एई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कोन करा जीवो डेवलपमेंट बेसिस रे इंडिया भी यूज करबा को चाहिबो. काहे कि ना इंडिया कोन करूची इंडिपेंडेंट AI डेवलपमेंट करबा को चेष्टा करूची. सेकंड स्टेटमेंट भी कोन हेतिबो ठीक हेतिबो. Then it is implemented by ISRO. ISRO ए दिन सरे इन्वॉल्व नहीं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाई ISRO रो कोनसी प्रकार रो फंक्शन नहीं. ISRO will definitely not be here. किए थी वो ता आप जगह रे. This particular thing has been implemented by India AI Independent Business. India AI Independent Business द्वारा मल्टीप्लाई करा हेची, माने इंप्लीमेंट करा हेची. India AI Independent Business. Correct? Anchor द्वारा एटा को इंट्रोड्यूस करा हेची, and this also falls under the ambit of Digital India Corporation. एटा कहा अंडर रे फंक्शन करूची? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन अंडर रे फंक्शन करूची. आउ सेउटू ए दिनसर डिस्कशन न्यूज रे आ ता पाई एटा कोन हे जिवो स्टेटमेंट 3 टा भूल हे जिवो. एटा इसरो द्वारा इंप्लीमेंट हेई नाही. 1 and 2. Good. Ministry of Electronics and Information Technology. ता अंडर रे अछि. मिनिस्ट्री अंडर रे अछि. Good. Good afternoon, Shubham. You have been missing 2 to 3 classes. Thank you. ठीक अछि. Next. Which of the following is expected in 6G networks? Ebe 6G networks talk of the town. 6G networks are being introduced into the segment. The 6G networks भितरे कोन कोन दिनस इंप्लीमेंट होवा पई जाउची. आ 6G networks केमिति हेल्प करिवे से दिनस कहब. फर्स्ट ऑफ ऑल 6G networks कहा भितरे परफॉर्म करिवे 100 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रु नै की 10 टेराहर्ट्ज रो फ्रीक्वेंसी पर्यंत 6G परफॉर्म करिवो. ए बैंडविड्थ रे 6G नेटवर्क्स इंट्रोड्यूस करा होची सो दैट अल्ट्रा हाई डेटा स्पीड्स अचीव होबो. अल्ट्रा हाई डेटा स्पीड्स माने एबे जो डेटा स्पीड तमे देखुछो ता थारु भी अधिका स्पीड रे डेटा तम पाखो को ट्रांसमिट होबो. देन लो लेटेंसी. बेसिकली लो लेटेंसी माने कोन ए जो गैप आसुची माने सर्वर रिसीव करबा आ ताको माने सप्लाई करिवार जो गैप अछि सेटा को लेटेंसी. जदि लेटेंसी अधिका थाए ताले कोन हबो डिले अधिका हबो. ता माने मु एठी जते वीडियो रिकॉर्डिंग करूची तम पाखो को जतबे टेलीकास्ट होची किछि सेकेंड्स रो डिले रहे. तो ए डिले टा रहिबोनी जदि लो लेटेंसी रहिबो. लो लेटेंसी रहले ए डिले टा सेठी रहिबो नाही, देखिया को मिलिबो नाही. तो तेन करी एठी कोन हबो लेटेंसी बिलो 1 मिलीसेकंड. 1 मिलीसेकंड रो बिलो लेटेंसी भी 6G नेटवर्क्स अचीव करिया पई सक्षम हेबे बोली कहउची. देन
फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहूची टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रो यूसेज करबो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूटिलाइज हबो 6G नेटवर्क्स रे अल्ट्रा लो लेटेंसी लेटेंसी लेस देन 1 मिलीसेकंड 6G टेक्नोलॉजी रे आसीबो ठीक तो लेस देन 1 मिलीसेकंड एटा के भलिया देखा जाउची नॉट द के less than 1 millisecond technology is being achieved in 6G networks. Complete elimination of satellites, this is never possible. जहाँ भी होना कहीं की satellites ऊपर dependency रहिबो और satellites through रे ही network रो communication model चलिबो. That is why एटी कौन है जीवो? कौन है जीवो? One and right? Good. Next, आगु बढ़िबा. Which of the following best describes CRISPR based therapies in news? एटा सही थेरापी जो हाबिस एबे कथा हेतिले CRISPR रो फुल फॉर्म मु कहितली क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स ता माने आरएनए रेप्लिकेशन छोटो रेप्लिकेशन एटा कोन पई यूज करा जाउची एथि पई न्यूज रे कोन अछि एबे कोन डेवलप कले हमें माने एबे कोन डिस्कस कले बेसिकली वैक्सीन डेवलपमेंट रे CRISPR यूज करा होची की वैक्सीन डेवलपमेंट रे तो नाही डीएनए मॉडिफिकेशन रे CRISPR टेक्नोलॉजी यूज करा होची ओके नहीं CRISPR टेक्नोलॉजी टा कोथि यूज करा होची डीएनए मॉडिफिकेशन रे आ जदी डीएनए मॉडिफिकेशन रे यूज करा होची ताहले कोन जेनेटिक थेरापी कोहा गला ना नाही एबे डिस्कस कले जेनेटिक थेरापी विषय रे तो जेनेटिक थेरापी विषय रे जदी डिस्कस कले एटा कोन होबा आंसर वैक्सीन डेवलपमेंट नाही प्रिसाइज जीन मॉडिफिकेशन प्रोटीन सिंथेसिस किंबा आरएनए डिग्रेडेशन तो नुहे आरएनए मॉडिफिकेशन प्रोटीन सिंथेसिस अच्छी बट देन इट इज बेसिकली जीन मॉडिफिकेशन रो प्रोसेस दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई रूपी सेंट्रल डिजिटल करेंसी रिगार्डिंग रे किछटा स्टेटमेंट एठी दिया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रो जदी सेगमेंट देखिबा ताहले एटा कहा द्वारा इश्यू करा हेतिबो ना ही कहूची सीबीडीसी आ सीबीडीसी माने कोन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी माने सेया तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यदि कहूची इंडिया रो सेंट्रल बैंक के आरबीआई द स्टेटमेंट इज करेक्ट it is equivalent to cryptocurrency like bitcoin equivalent कहूची equivalent माने कोन सेटा कोन प्राइवेट bitcoin is a basically uncontrolled form of money transfer or uncontrolled currency एटा uncontrolled भी तापरे किसी जगह रे इथरे इलीगल ट्रेड भी हबार संभावना अछि बट जेहेतु ई रूपी जोटा आरबीआई लॉन्च करिछि सेटा सेंट्रल बैंक द्वारा कंट्रोल्ड अछि एटा बिटकॉइन भलिया हेई परिबो नाही cryptocurrency माने similar to the ideas of bitcoin but not very equivalent to bitcoin it is a legal tender yes RBI launch करिछि तो definitely legal tender ही हेतिबो आंसर इजी थिला ए क्वेश्चन रे किछि करिवार नथिला still most of you have not answered the question correct next कोन लिखा होछि आदित्य L1 मिशन को कंसीडर करो एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आदित्य L1 मिशन विषय जदी कथा हबा ताहले आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शो यू समथिंग ए L1 पई मु गोटे पर्टिकुलरली आनी थिली आई बिलीव जस्ट अ सेकंड आई विल शो यू एन इमेज फॉर दिस L1 पर्टिकुलरली L1 टा कोन सेटा बुझेबा पई इमेज टा देखले ठीक बेसिक क्लैरिटी मिलेबो ठीक just give me 1 minute I will bring out that image गोटे सेकंड खाली होल्ड करो watch this image देखा जाउछ I believe ठीक है क्लैरिटी दरकार खाली just for your understanding purposes एडी कोन अछि this is sun here एडी sun अछि correct it is this is sun here this is your earth here right ए पॉइंट टाको L1 पॉइंट कहा जाय Lagrangian point 1 एटा को L1 पॉइंट कहा जाउछि एठी L2 पॉइंट अछि आ ऊपर को जदी हम जिबा ताहले एठी L3 पॉइंट भी अछि somewhere here in the orbitals L3 पॉइंट ता एठी ऊपर अछि L3 पॉइंट एठी ऊपर अछि एठी L4 आ एठी L5 एमिति पांचटा डिफरेंट Lagrangian पॉइंट्स अछि एबे हम कोन कहले आदित्य L1 मिशन ता बेसिकली कोन ए आदित्य माने होछि सूर्य
ए मिशन टाको इनिशिएट करा हेतला जो थरे कि L1 पॉइंट रे सैटेलाइट ड्रॉप करा हला तो L1 पॉइंट रे जतो सैटेलाइट ड्रॉप करा हला ए L1 पॉइंट रो से सन रो पेरिफेरी माने सन रो आउटर जो फ्लेयर्स अछि से एरिया रे अछि आ से थ्रू से सन ऊपर स्टडी करिया पे ए पर्टिकुलरली मिशन टाको इंट्रोड्यूस करा हेतला राइट एति के क्लियर हला हियर आई विल अगेन show you something else right good the way we will come back to the question with reference to the Aditya L1 mission consider the following statements. It is placed in a halo orbit around the L1 Lagrange point. Yes, this statement is correct. एबे मु तुमको इमेज देखेली. It studies solar corona and solar wind. Solar corona and solar wind ऊपर स्टडी करूची, solar flares ऊपर भी स्टडी करूची. सन रो क्रोमोस्फियर, ट्रोपोस्फियर माने तार ऊपर पेरिफेरी, तार फ्लेयर रीजन से सब जिंस ऊपर स्टडी करूची. And second statement is also correct. It operates from geostationary orbit. Geostationary orbit habo nahi. It operates from far beyond than the geostationary orbit. Geostationary orbit ru bhi bahut adhika दूर रू से orbit generate माने basically operate करूची. तो geostationary orbit थारो आहुरी दूर रे अछि तमरा L1 point. L1 point रू operate करूची geostationary सहित किछि मतलब नाही. बाकी हमरो सैटेलाइट्स बहुत सारा geostationary satellites रे लॉन्च हुए जोडा कि हमरो जेमति तमे कहउछ जीपीएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ए सब दिन तमर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स रे लॉन्च हुए करेक्ट गुड तो थर्ड स्टेटमेंट कोन हे जिवो भूल हे जिवो आंसर कोन 1 and 2 ओनली नेक्स्ट green hydrogen frequently mentioned in news is produced by green hydrogen केमिति प्रोड्यूस हुए green hydrogen basically कोन हुए green hydrogen is produced by the electrolysis of water वाटर रो इलेक्ट्रोलिसिस करिकी ग्रीन हाइड्रोजन को अचीव करा जाए ए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट करा जाए पानी भितरे एंड दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज अचीव्ड थ्रू वेरियस मेथड्स बहुत सारा मेथड्स है इलेक्ट्रोलिसिस अचीव करी हबो देयर इज नो माने सेकंड थॉट इन दैट तो ग्रीन हाइड्रोजन कोथरे केमिति अप्लाई करा होची इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोलार विंड हो किंबा तमरो माने सॉरी सोलार पावर हो किंबा विंड पावर हो सेटा को यूटिलाइज करिकी रिन्यूएबल एनर्जी को करिकी पानी रो इलेक्ट्रोलिसिस करिकी ग्रीन हाइड्रोजन अचीव करा होची दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट आहुरी भी बहुत प्रकार रो हाइड्रोजन रो सिस्टम यूटिलाइजेशन रे अछि गोटे होची तमरो ग्रीन हाइड्रोजन गोटे होची तमरो ब्लू हाइड्रोजन देन यू हैव योर ग्रे हाइड्रोजन एमिति डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आर अचीव्ड ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेस बहुत सारा प्रोसेस यूटिलाइज करके हाइड्रोजन अचीव करा होची एंड सेति पय बाकी सब स्टेटमेंट कोन हे जिवो भूल हे जिवो एबे जदि मु कहबे कोल गैसिफिकेशन विथ कार्बन कैप्चर ए कोल गैसिफिकेशन विथ कार्बन कैप्चर ये कोन जनरेट करूची दिस विल जनरेट ब्लू हाइड्रोजन कहि दोची तुमको एठी we also have a different question of match the following तो सेति पय सेटा सेतिक बेले तुमको हेल्प करा हबो ब्लू हाइड्रोजन स्टीम मीथेन फॉर्मेशन जदि मीथेन फॉर्मेशन हेची मीथेन गैस को पास करके जदि हाइड्रोजन को डिराइव करा होची ताले सेथिरे को हाइड्रोजन ता से ग्रे हाइड्रोजन ता रिसीव हुए biomass combustion is basically a process of pyrolysis तो biomass combustion रे सत तमो किछि इंटरेस्ट हबा कथा नाही एथिरे हाइड्रोजन रो जेनेसिस सहित किछि मतलब नाही गुड the term SPADEX mission refers to SPADEX माने कोन what is the full form of SPADEX SPADEX रा full form कोन SPADEX रा full form होची space docking experiment स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट माने कोन दीटा स्पेसशिप्स अछंती आ से माने दीटा को प्रकार स्पेसशिप वी विल हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पेसशिप हम बगरे स्पेस शटल्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पेस शटल्स अछंती कोन स्पेस शटल्स अछंती आगुरु कोन थिला हम बगरे आगुरु फर्स्ट गोटे थिला एएसएलवी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देन तमर कोन आसी जिवो एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देन पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जीएसएलवी geostationary satellite launching vehicle correct so geostationary orbiter जेतल लॉन्च हुए देन आसीगला गोटे एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल दैट वाज आल्सो देयर इन द न्यूज़ एडी बेसिकली कोन पीएसएलवी यूज करा होची आ पीएसएलवी को यूज करा है कि स्पेस भितरे ही गोटे रनर थिबो हला आ गोटे चेजर थिबो तो ये कोन करबो ये आकु गोडे कि या ऊपर डॉक होबा को चेष्टा करबो एठी डॉक होबा को जेतल चेष्टा करबो सेतबेले स्पेस रे बहुत प्रकार एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हे परिबो तो एटा को बेसिकली स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाए डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जेम्स वेब टेलीस्कोप अछि सेटा हबो नाही सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम तमरो जीपीएस सिस्टम सेटा भी हबो नाही प्लैनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म नॉट पॉसिबल बी इज द करेक्ट ऑप्शन हला
स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट बेसिकली गोटे अछि स्पैडेक्स बोल ताको ना कुआ. Next, with reference to carbon markets, consider the following statements. Carbon credits represent a reduction or removal of greenhouse gas. Carbon credits basically introduces the reduction or removal of greenhouse gases. Yes, definitely ए जिनसटा हमें जानिछे carbon credit trading scheme गोटे अछि जोथरे कि carbon credit available हुए सब कंट्रीज ए सब कंट्रीज को जो कार्बन क्रेडिट अवेलेबल हुए ए कार्बन क्रेडिट टा सेही कंट्रीज माने यूटिलाइज करि परिबे जो माने ग्रीन हाउस गैसेस रो रिडक्शन अचीव करि पारंती. जो माने ग्रीन हाउस गैसेस रो रिडक्शन को अचीव करंती तांको किछटा कार्बन क्रेडिट मिले. जो माने ग्रीन हाउस गैसेस रो रिडक्शन करि पारंतीनी अधिका पॉल्यूशन करूचंती सेमानको ऊपर कार्बन क्रेडिट लागू करा जाय. तो एमाने कोन करिवे एबे सेही कंट्रीज जहां पाखरे कार्बन क्रेडिट अधिका अवेलेबल थिबो ता पाखरु परचेज करबे. जेमति यूएसए हैड परचेज फ्रॉम इंडिया सम कार्बन क्रेडिट्स. तमे यूएसए रो पॉल्यूशन अधिका होतला अधिका पॉल्यूशन से करतला इंडिया पॉल्यूशन रे रिडक्शन देखितला. तो इंडिया पाखरे किछटा कार्बन क्रेडिट थिला जोडा से यूएसए को बिकी देला विथ सम टर्म्स ऑफ मनी. तो किछटा मनी रो फाइनेंशियल फॉर्म्स रो इंट्रोडक्शन भी करा हिची एथिरे. तो कार्बन क्रेडिट रे बेसिकली कोन जो कंट्री कम एमिशंस करूची सीए रिच कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज जो मानकर अधिका पॉल्यूशन होची ताको कार्बन क्रेडिट बिकी कि तांको पाखरु पैसा एसी माने रिसीव करि परिबो. आकु इंडिया कोन करिची आकु बेसिकली इंडिया गोटे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट अंडर रे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को इंट्रोड्यूस करिची. ए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को इंट्रोड्यूस करके इंडिया ऑफिशियली इंडियन कार्बन मार्केट को इंट्रोड्यूस करिची. करेक्ट एंड दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग. इंडियन कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस करा हैची एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट तहत ए दिनसटा को इंट्रोड्यूस करा हैची. ठीक एति बुझा पड़ला एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट. तो आ थ्रू रे फर्दर मूविंग फॉरवर्ड इज कौन देखिए को मिलवा स्टेटमेंट वी विल डिस्कस. कार्बन क्रेडिट्स रिप्रेजेंट रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ग्रीनहाउस गैसेस. ट्रू. कार्बन ट्रेडिंग एनकरेजेस इंडस्ट्रीज टू एमिट मोर पॉल्यूटेंट्स. नाही कार्बन ट्रेडिंग एनकरेजेस नुहे एटा कोन हवा कथा डिस्करेजेस. काहे ना कार्बन क्रेडिट थ्रू रे फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन लागिबो गोटे कंपनी ऊपर सेथिरे कोन हबो जहां पाखरे अधिका कार्बन क्रेडिट हेई गला जवन जे अधिका पॉल्यूशन जनरेट करथबो सी बाकी कंपनीज कठू क्रेडिट आनिबा को चेष्टा करबा. आ जदि सब कंपनीज माने अधिका कार्बन एमिशन कले ताल से कंपनीज को बंद कर दिया जिवो. एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इंडिया इज ए डेवलपिंग एंड डोमेस्टिक कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क ए दिन सरा मु एबे डिस्कस करली. इंडियन कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क फ्रेम हेई सारी लाणी ऑफिशियली इंडिया एटा को गोटे मार्केट हिसाब रे लॉन्च करि सारा. राइट. नेक्स्ट, the bio E3 policy recently in news aims to promote bio E3 policy. एबे E3 टा कोथि पय अछि जदि जानिथिबो ताले हेइ जिवो. ए जो bio E3 अछि ए यार फुल फॉर्म होछि कोन बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायोटेक्नोलॉजी रो यूसेजेस फॉर कोथि पय इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. एटा होछि E3 पॉलिसी. बायोटेक्नोलॉजी रो यूज करके एतिके अचीव करा जिवो. द क्वेश्चन कोन कहूची इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी एक्सपोर्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन. आंसर कोन हबो? करेक्ट. इजी. रे क्वेश्चन तो इजी थिला बुझ पारलो. Next, with reference to rare earth elements, consider the following statements. Rare earth elements बहुत सारा न्यूज रे अछि. एक्सपेक्ट करो एथरा तुमको मेंस रे रेयर अर्थ एलिमेंट्स रो क्वेश्चन देखिया को पड़ी मिली पारे फर्दर आगो को भी. काहे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो मार्केट अछि चाइना डोमिनेट करू. 60 to 70% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ट्रेड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एटा किए डोमिनेट करूची चाइना डोमिनेट करू. आरईई बोली कुहा जाय सेटा को आरईईज रे चाइना हैज बीन डोमिनेटिंग द मार्केट. इंडिया पाखरे स्टॉक अछि ना नाही. इंडिया पाखरे भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स रो स्टॉक अछि. रेयर अर्थ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर पर्पसेस एनर्जी टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स सब थरे यूज करा होची. तापरे स्टेटमेंट देखिबा दे आर एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज. ए दिन सरा एबे कहली स्टेटमेंट ता कोन हे जो ब्लाइंडली ठीक मार दबो. देयर ग्लोबल सप्लाई इज कंसंट्रेटेड इन ए फ्यू कंट्रीज. दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. ए दीटा स्टेटमेंट परस्पर को कॉन्ट्राडिक्ट करूछन. ताले आइदर एटा हबो नहले एटा हबो. जदि मु कहली जे चाइना डोमिनेट करूची से मार्केट को अराउंड 60-70% ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स रो मार्केट टाकू चाइना ही डोमिनेट करिची. साउथ ईस्ट एशिया रे
और बेसिकली तमर ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया रे आमे एई जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स रो डिस्ट्रीब्यूशन टा अधिका देखिबा को पाउचे चाइना वियतनाम ब्राजील रशिया एंड इंडिया हला ब्राजील इज फ्रॉम द अमेरिकन अदरवाइज एल्स बाकी समस्त एपट अछंती चाइना वियतनाम रशिया इंडिया आउडे ब्राजील रे भी टिके रेयर अर्थ एलिमेंट्स रो अवेलेबिलिटी देखिया को मिल ए कंट्रीज मानकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स रो डिपॉजिट अधिका देखिया को मिले आ ए कंट्रीज मानक पाखरे ए सिस्टम टा कंसंट्रेट हेकी अछि तो कंसंट्रेशन रो जो स्टेटमेंट अछि सेटा ठीक हबो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ए स्टेटमेंट टा करेक्ट गुड आगो बढ़िबा with reference to artificial intelligence consider the following statement easy हवा कथा से क्वेश्चन तुमको समझते आजकल बहुत ही चैट जीपीटी करूछ बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिपेंड करूछ फोटो एडिटिंग भी कर दउछ नुआ नुआ जेमिनाई कोन तो नानो बनाना जेमिनाई रे बहुत सारा पिक्चर एडिटिंग होछ समस्ते करूछ डेफिनेटली तो से एआई रो क्वेश्चन ता भी तुम करि परिबा दरकार नेक्स्ट AI system can exhibit algorithmic bias exhibit करि पारंती artificial intelligence systems AI models may generate incorrect outputs known as hallucination. AI मानकु भी बेले बेले hallucination ही पारे जो थरे कि से माने erroneous किंबा nonsensical data generate करि पारंती. AI systems always produce accurate and deterministic results. आ भितरु को statement माने ठीक अछि. Yes. Easy question अछि. हबा दरकार तुम द्वारा give me the answer ता भितरे have some water yes 3 is wrong good से कहूची algorithmic bias हेई पारे can exhibit algorithmic bias yes this is correct बेले बेले ChatGPT is developed through your searches तमे जेमिति सर्च करू सेमिति ही डेवलप करे ता माने जदि गोटे सिक्वेंशियली 10टा जिंस डेवलप कर माने सर्च कर साला परे इफ यू कमांड द 11th सेगमेंट इन अ डिफरेंट सिनेरियो ताहले ChatGPT बिहेव करि परिबो नाही algorithmic bias सेला शो करि पारे से कोनोसी प्रकार रो इनकरेक्ट आउटपुट्स भी देई पारे भूल आंसर भी देई पारे known as hallucinations nonsensical data भी देई पारे ता माने जो डेटा रो किछि लिंक नथिबो लेन देन नथिबो से डेटा भी देई पारे जदल सर्च करूचो सी तारो पूरा एम्बेड रे सब सर्च करिवो आ सेति पय किछिटा इमेज एडिटिंग रे तमे देखिबो जे इट कैन नॉट मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द लेटर्स रो एक्यूरेसी किछिटा भूल भाल भी हे जाउथबो राइट त सेति पय ए स्टेटमेंट ता भी ठीक अछि AI systems always produce accurate and deterministic value जदि ए दीटा स्टेटमेंट ठीक हला ताले थर्ड स्टेटमेंट ता ऑब्वियसली भूल हे जिवो राइट गुड गुड आफ्टरनून स्वरूप करेक्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ए क्वेश्चन मागरो डिस्कस करि सारिछि सेति पय आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू आंसर दिस फटाफट आंसर करो ए दिन से डिस्कस कले कोन ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रिन्यूएबल एनर्जी यूटिलाइज करके इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन तयारी होची ठीक अछि ता माने एटा कोथरे जीवो एटा 1 को जीवो एटा 1 कोथरे अछि दीटा रे अछि एबे को दिनस चेंज अछि सेटा देखिबा A1 आउ D4 एटा बोथ ऑप्शंस रे अछि ठीक अछि हम किछ असुविधा नाही B1 आउ C3 देखि दबा माने सॉरी वी विल सी बेसिकली B2 C3 एटा B2 C3 अछि एटा B3 C2 अछि P2 ब्लू हाइड्रोजन कोठु जनरेट हबो कहिली फॉसिल फ्यूल प्लस CCS माने बेसिकली एटा CCS कार्बन ट्रैप एंड कार्बन एमिशन रो बेसिकली स्ट्रेटजी एटा को यूज करा जाय तो कार्बन को ट्रैप करके सेरा को एटमॉस्फेयर को माने स्टोर भी करा जाय तो कार्बन ट्रैप एंड कार्बन स्टोर रो बेसिकली मेथड सेटा फॉसिल फ्यूल को यूटिलाइज करके ब्लू हाइड्रोजन जनरेट करा जाउची दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट काहे कि मीथेन गैस रो फॉर्मेशन
मिथेन गैस रो फॉर्मेशन हे साला परे मिथेन गैस रु जते इलेक्ट्रोलिसिस हुए सेटा ग्रे हाइड्रोजन हुए बोली भी मु एबे डिस्कस कली ता माने कोन ग्रे हाइड्रोजन विल गो टू नेचुरल गैस रिफॉर्म माने कोन मिथेन एठी भी नेचुरल गैस अछि हला दिस इज आल्सो नेचुरल गैस बट दिस इज सीएनजी बेसिकली आ एटा होछि तमरो मिथेन जो तमरो डंपिंग यार्ड रे सबटु अधिक डेवलप हुए सेटा होछि मिथेन एथे मिथेन गैस रु इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करके ग्रे हाइड्रोजन आसे फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस सीएनजी सेथरु इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करके ब्लू हाइड्रोजन आसे A1 B2 C3 D4 ऑप्शन गुड नेक्स्ट topological acoustic sensor developed to detect helium leaks with high precision consider the following statement topological acoustic sensor developed eta develop kara jaye cng gas ro drilling belku basically kichita helium seti formation hue heliums are basically formed due to the alpha decay helium ta kemiti form hochi helium ta atmosphere re achi no doubt but helium ta primarily form hue due to the alpha decay of radioactive materials samane underground radioactive materials jo mane achanti सेमानकर अल्फा डीके हला बेलकु ए हीलियम गैस टा जनरेट हुए हीलियम रो फॉर्मेशन हुए हला हाइड्रोजन हीलियम हीलियम इज द सेकंड माने सेकंड एलिमेंट इन द चार्ट पीरियोडिक चार्ट टेबल और पीरियोडिक टेबल रे तो सेति पे हीलियम टा एमिति जनरेट हुए अधिका सीएनजी गैस रो ड्रिलिंग हला बेलकु अंडरग्राउंड रो अधिका हीलियम टा रिसीव करा जाय तो ए हीलियम गैस टा को सेठु केमिति माने लीक न होबो ता पई गोटे सेंसर डेवलप करा हैछि वी विल सी द क्वेश्चंस helium found on earth is primarily produced through the alpha decay of radioactive elements ए स्टेटमेंट एबे ही जस्ट बुझाई देली तो ब्लाइंडली टिक मारी दउची ता बादे तमे करिवो helium is absolutely available in earth's atmosphere making its long term supply secure for industrial use कोन कहउची से कहउची जे helium is absolutely available in earth's atmosphere this part of the statement is correct helium earth रे atmosphere रे available अछि एटा ठीक कथा किंतु making its long term सप्लाई सिक्योर फॉर इंडस्ट्रियल यूज लॉन्ग टर्म सप्लाई माने कोन एटमॉस्फेयर रो एटमॉस्फेरिक एयर को कैप्चर करिकी ता भितरु हीलियम को बाहर करिबा हीलियम नियरली सम डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट्स रे अवेलेबल अछि इन द एटमॉस्फेयर आ सेठु हीलियम बाहर करिबा इज ए वेरी कॉस्टली प्रोसेस आ ता सहित एटा अनप्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकली फिजिबल भी होबो नाही इंडस्ट्रियल यूज पय हीलियम ता सेठु बाहरिबो ए दिनसडा केबे पॉसिबल नहे Helium is critically used in MRI scanners. Yes, this is correct. Helium ta MRI scanners re bhi use hue. High welding points, high heat welding process re bhi use hue in order to create an envelope so that oxidation reaction does not get in. Deep sea diving re bhi use hue. That is also correct. Pressurized tanks को generate करिया पाई mixtures को shielding gas बढ़िया use करिया पाई भी generate हुए. This statement is also correct. Answer कौन है जी वो? B. ठीक. Next, which of the following best explains asymmetric warfare? Asymmetric warfare माने कौन? जोटा definitely symmetric है नथिबो. Symmetric है नथिबो माने कौन? जोटा सब आड़े equal distribution है नथिबो. No kinds of equal distribution. एति हिंट तो मु दे देली. ता परे आंसर करो. Right. Now try to answer. Use of advanced tech by weaker actors कहउछ. Okay. आउ कार किछ अछि? डेफिनेटली एसिमेट्रिक वारफेयर कहली जो कंट्रीज डेवलप हे सारी चंती तांका पाखरे बहुत सारा बजेट अछि मिलिटरी ऊपर स्पेंड करबा पय जहा पाखरे बजेट नाही सी कोन करबो जो कंट्रीज मानक पाखरे बजेट अछि से माने हाई टेक मिलिटरी गैजेट्स आनंती हाई टेक वारफेयर गैजेट्स आनंती जो मानक पाखरे सेति की बजेट नाही से मान कोन करंती ड्रोन्स एआई यूज करंती सॉफ्टवेयर कोडिंग हैकिंग सिस्टम्स यूज करंती ता माने से माने एफोर्ड करि पारंती डेवलप कंट्रीज को बीट करबा पय बट डेवलप कंट्रीज ऊपर स्पाई करिया पय किए कोन डेवलप करूची किए कोठी आनुची माने बेसिकली किए कोठू टेक्नोलॉजी रिसीव करूची ए सब दिन को स्पाई करिया पय ताको सिस्टम को डिसरप्ट करबा पय बहुत सारा स्मॉल कंट्रीज किछिटा सस्ता अचीवमेंट्स करंती माने सस्ता सेगमेंट को टच ऑन करंती जो थरे कि तांकर लॉस ऑफ लाइफ किबा मिलिटरी गैजेट्स को जति यूटिलाइज न करि परिबा ताको काउंटर करिया पय यूटिलाइज करंती सेटा को कहा जाय एसिमेट्रिक वारफेयर आ एठी वॉर यूजिंग इक्वल रिसोर्सेस भूलै जिवो right nuclear war definitely not
बायोलॉजिकल वारफेयर ओनली, बायोलॉजिकल वारफेयर भी एटा नुहे, बायोलॉजिकल वारफेयर समवट हे पारे बट देन यूज ऑफ एडवांस टेक बाय वीकर एक्टर्स दिस इज मेनली पॉसिबल। बायोलॉजिकल वारफेयर हे पारे काहे कोविड 19 में देखले जे बेसिकली जदि गोटे कंट्री किछिटा जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस को आने की अन्य कंट्री रे छाडी परिबो ताहले से कंट्री रो मिलिटरी पावर थाउ न थाउ से अन्य कंट्री रो माने स्टेबिलिटी को डिवास्टेट करि परिबो एंड दैट इज आल्सो ए पार्ट बायोलॉजिकल वारफेयर हे पारे बट बायोलॉजिकल वारफेयर ओनली नुहे त एम्बिट ता अधिका वाइड अछि त एम्बिट अधिका वाइड अछि बहुत सारा डिस्कशन से भितरे हे परिबो राइट। नेक्स्ट, with reference to biotechnology discoveries in March 2026, March 2026 new earthworm species were discovered in Western Ghats. Western Ghats re nua earthworm species discover heithile. Is that true or false? Second statement kon kahuchi? Second statement kahuchi these discoveries contribute to biodiversity knowledge. tamane jodi first statement ठीक हेइथिबो second statement भी definitely ठीक हबो। tamane jodi nua earthworms develop हेइथिबे तो semane biodiversity knowledge को add on हेइथिबे, this statement will be definitely correct. Such discoveries have no ecological significance. जदि first statement ठीक हेइथिबो third statement definitely भूल हेइजिबो, second statement भी जदि ठीक हेइजिबो third statement टा definitely भूल हेइजिबो। तामाने तमे segment रे कोई आंसर टा न्यूज टा जानि थाओ कि न जानि थाओ कौन करि पारिबो इन जनरल गेस करि पारिबो जे 3 टा भूल हबो। जदि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हला सेकंड स्टेटमेंट ठीक हबो करेक्ट, आ दिया जदि स्टेटमेंट ठीक हेले थर्ड स्टेटमेंट टा भूल हबो, आ जदि हबो ताले थर्ड स्टेटमेंट ठीक हबो ए दिटा स्टेटमेंट भूल हबो। 3 ओनली तो ऑप्शन रे नाही, डेफिनेटली 3 टा एलिमिनेट कर दबा, 1 एंड 2 ओनली इज द आंसर। बट देन न्यूज़ कोन कहूची, न्यूज़ मार्च रे आसीतला जे किछिटा मोनोली माने बेसिकली मोनोली गैस्ट्रिड फैमिली रो नुवा अर्थवर्म स्पीसीज देखिबा को मिलची and they belong to the Dravida species. Dravida species बोली तांको कहा जाए हला Dravida Dravida species को सेमाने belong करंती। New earthworms have been discovered in the Western Ghats. कोठी Western Ghats रे Silent Valley in National Park in Kerala. Silent Valley National Park रे ए earthworms माने discover हेचंती आ biodiversity रे definitely ए माने अधिका contribute करूचंती। किछिटा नुवा जिंस देखिबा को करेक्ट एटा केरला रे केरला पाखरे साइलेंट वैली नेशनल पार्क रे डिस्कवर हेचन। दिस इज द न्यूज़ and they belong to the Dravida species and the question is definitely A option is correct. ठीक, near your Vazani dam area पाखरे Vazani dam से एरिया पाखरे Vazani dam area पाखरे डेवलप डिस्कवर हेची। नेक्स्ट, which organization launched the Bodhi benchmarking and optimization of digital health AI platform in collaboration with IIT Kanpur? IIT Kanpur सहित मिसिकी बोधि रो जो सिस्टम क्रैक करा हेची सेटा किए डेवलप करिसंती? दिस इज द क्वेश्चन आस्किंग करेक्ट। बेसिकली इंडिया एआई इंपैक्ट समिट हेतला 2026 मार्च रे दिल्ली रे फेब्रुअरी रे हेतला बेसिकली से समिट टा इंडिया एआई समिट रे ए सब दिन सर इंप्लीमेंटेशन करा हेतला। एआई यूटिलाइज करकी हेल्थ सेक्टर को केमती डेवलप करबा से दिन सर डिस्कशन एठी हेतला। ठीक, आ परवर्ती क्वेश्चन टा भी ए सेम दिन सब रिलेटेड अछि। ये डेवलप कले बेसिकली ये जो बोधिटा अछि बेंचमार्किंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ एआई डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट्स माने डिजिटल स्टोरेज प्राइवेसी सिक्योर करके डिजिटल स्टोरेज इंफॉर्मेशन रहिबो सब पेशेंट्स मानकर ए दिनसटा आईआईटी कानपुर सहित मिसिकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डेवलप करिछि। The NHA has developed this particular platform with the collaboration of IIT Kanpur. IIT Kanpur सहित collaboration करके develop करिछि। The second question, the next question is also similar that second এটা আমি করেছে ओके ठीक আছে आपरे আছে Neosat 1A correct Neosat 1A nano satellite launched by South Korea is primarily designed for कहा ପାଇଁ डिजाइन करा हेची साउथ कोरिया ए जो सैटेलाइट लॉन्च करिछि आर गोटे ग्रुप बैंड ऑफ सैटेलाइट्स अछि। वाह, थैंक यू फॉर द एडिशनल नॉलेज शुभम। ओके गुड,
तबे कौन अच्छी न्यूसैट 1A एटा गोटे ग्रुप ऑफ बैंड ऑफ सैटेलाइट्स अछंती जो माने एका थरे लॉन्च करा हबो तमाने एठी एबे तो लॉन्च कले समवेयर अराउंड 100 सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च्ड बाय साउथ कोरिया इन दिस पर्टिकुलर मिशन आ एटा कोन पई लॉन्च करा हबो से दिनसटा ही क्वेश्चन पचारुची डीप स्पेस कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स नानो सैटेलाइट सहित डीप स्पेस कम्युनिकेशन प्रोग्राम रो किछि लेन देन नाही डीप स्पेस कम्युनिकेशन प्रोग्राम हेले टेलीस्कोपिक दिनस आ अधिका बड़ सैटेलाइट को सेगमेंट करिया को पड़े जो कि बहुत सारा इक्विपमेंट्स लोड आउट होता है तो ये जो इक्विपमेंट्स लोड आउट होता है से एटा नहीं मॉनिटरिंग कोरियन पेनिनसुला एंड नियर बाय रीजन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कोरियर पेनिनसुला आउ नियर बाय रीजन्स को मॉनिटर करबा पई ए पर्टिकुलर न्यूसैट 1A लॉन्च करा हेची से ग्रुप रे आहुरी किछिटा बैंडविड्थ रो सैटेलाइट्स अछंती जो माने एकाथरे लॉन्च करा हेबे आ से माने कोरियर आखुपाख रीजन्स को सब बेले पई सर्वे करबे ऑल टाइम सर्वे करि चलबे वेदर फोरकास्टिंग फॉर अंटार्कटिका पई नुहे weather and all kinds of forecasting for the South Korea रो ही forecasting ପାଇଁ सेरा यूज करा हबो मिलिटरी नेविगेशन सर्विसेज भी यूटिलाइज हबो बट सेरा साउथ कोरिया ପାଇଁ ही त माने कोन एटा को स्मॉल एम्बिट रो ऑप्शंस गुडा को डेफिनेटली मॉनिटरिंग कोरियन पेनिनसुला पूरा कोरियन पेनिनसुला को मॉनिटर करिया ପାଇଁ इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलरली क्वेश्चन करेक्ट the सही strategy for artificial intelligence in healthcare in India एडा ही मु डिस्कस करिथिली जे इंडिया एआई समिट 2026 इंडिया हेल्थ केयर एआई माने इंडिया एआई समिट जोटा मार्च रे हेतला जेपी नाडा वाज बेसिकली देयर प्रेजेंट जेपी नाडा डेवलप्ड these kinds of platforms and these particular integration जो हेल्थ सेक्टर एआई सहित हला एडा सेठी हला न्यू दिल्ली रे हेतला ए पर्टिकुलर समिट टा तो सेथिरे तुमको मन रखा पड़िबो कोन बोधी लॉन्च हेतला आउ सही भी लॉन्च हेतला स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर को प्रकार रो स्ट्रेटजी रे हेल्थ केयर टाको एआई सहित इंटीग्रेट करा जिवो आउ एआई सहित इंटीग्रेट करिके पेशेंट्स माननको विषय केमिति इंफॉर्मेशन जनरेट करा जिवो ता पई ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म टा आसीतिला स्पेस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हबो नाही हेल्थ सेक्टर कहूची हेल्थ सेक्टर जदी कहूची कोन हबो हेल्थ केयर सेक्टर एथिकल एंड इंक्लूसिव यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर एटा तो ब्लाइंड ऑप्शन जोटा ठीक देखा जाउची AI based military quantum computing research these options are false एक क्वेश्चन तो इजी ही थिला हां गुड पूरी डे भी हेल्थ कॉन्फ्रेंस हेतला दैट इज आल्सो करेक्ट India's first electric air taxi E200X is being developed through collaboration between IIT Madras and IIT Madras को कंपनी सहित मिसिकी E200X India's first air taxi को डेवलप करूची ए जो एयर टैक्सी डेवलप होची एथरे एआई भी इंटीग्रेट होची आ एआई इंटीग्रेट करिकी कोन करा जाउची वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग रो रिप्रोसेसिंग को डेवलप करा जाउची तो सेति पे कोन हबो आंसर India's first electric air taxi E200X is developed by which company sure sure अच्छा ना खाली गैस मार दलो एयरबस बोली गैस कर दलो यस इवटोल बेसिकली कहा जाए सेटा को सब गैस मार दलो ना इट इज बेसिकली एनवीडिया सहित इंटीग्रेट हेकी E200X रा डेवलपमेंट होची बोइंग यूएसए कंपनी जोटा बहुत सारा फ्लाइट्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप करे जे हमको भी बहुत सारा स्मॉल सैटेलाइट्स माने जेमति नेविगेशन सैटेलाइट्स एंड तमरो हमरो बने जो कोस्टल गार्ड्स पई P8I जोटा डेवलप हेतला सेटा बोइंग डेवलप करथला एयरबस रा डेवलपमेंट आ संगे E200 संगे रिलेटेड नुहे स्पेसएक्स तो हबो नाही इट इज एनवीडिया जहां संगे मिसे की E200X रा डेवलपमेंट होची एनवीडिया बेसिकली जो थरे तमरो बहुत सारा ग्राफिक ऑप्शंस ग्राफिक्स कार्ड डेवलप करा जाउची सेटा तमरा एनवीडिया सेक्टर लैपटॉप्स रे तमे देखिथियो एनवीडिया स्टिकर मरी के आस्थियो अच्छा अच्छा ओहो मनो आसिला ठीक अछि हला so with this I will be ending my session here हला my session has ended this was the last question of today बहुत सारा क्वेश्चंस हमें डिस्कस कले हला एमिति नाही जे ए सब क्वेश्चंस तम पई साइंस एंड टेक रो कोर रीजन रु नथिला एटा करंट अफेयर्स बेस्ड थिला जति कि न्यूज़ अछि एंटायर ईयर रे ते न्यूज़ को रिलेट करिकि साइंस एंड टेक रो क्वेश्चंस पकैथिली
नेक्स्ट सेक्शन रे जतबेला हम साइंस एंड टेक डिस्कस करबा किछिटा बेसिक क्वेश्चंस भी डिस्कस करबा जोथरे ओपीएससी प्राइमरली कोर रीजन्स ऑफ साइंस एंड टेक माने बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सेथिरे जतिके क्वेश्चंस आसुची से दिनसर डिस्कशन भी करबी जतबेला से दिनसर डिस्कशन करबी सेतळको आउ टिके इजी क्वेश्चंस भी रखिबा टिके मॉडरेट क्वेश्चंस भी रखिबा हला एई सेगमेंट रे कोन एई क्वेश्चन जोडा का तुमको टिके डिफिकल्ट लागि थाई पारे बहुत ओडिसा पिलां को इंटरेस्ट न थाई पारे माने साइंस एंड टेक पेपर टाको बहुत जण स्किप भी कर थाई पारंती but still I will say this is not the skipping part of your examination. This is current affairs related science and tech. अब आपको तमे skip करि परिबो नाही basic science and tech तमे skip कर दे परिबो current affairs को relate करिकि जदि science and tech अछि कोनोसी एग्जाम रे skip करि परिबो नाही you have to understand some kinds of basic किछि ना किछि तुमको बुझिबा को पड़िबो जदि skip करिवो ताहले पूरा science and tech skip कर दो right okay चलो I hope you enjoyed this session and this will be all from my side today साइंस एंड टेक सरिला काली को आउ थरे मते मो चेहरा तुमको देखिया को पड़िबो अगेन आई विल बी देयर एट 10 o'clock आज तो लाइन नथिला माने इट वाज इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ थिला तो 10टा बेले काली पुणी हमें देखा हबा हिस्ट्री रो डिस्कशन सहित काली पुणी प्रस्तुति सीरीज रे मॉर्निंग 10 o'clock रे वी हैव द हिस्ट्री डिस्कशन हिस्ट्री डिस्कशन कला परे आउ थरे वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक ए वीक रे मु आउ थरे आ गोटे मॉडर्न ओडिसा हिस्ट्री जोडा काली डिस्कस करथले तार भी डिस्कशन आनिबी बट सेही राती 9टा रे तो राती 9टा रे मॉडर्न ओडिसा हिस्ट्री रो डिस्कशन हबो काली दिन बेले हमें हिस्ट्री रो डिस्कशन करबा सेक्शनल सेगमेंट रे एंशिएंट डिस्कस करिचे किछटा मीडिएवल आ मॉडर्न रो क्वेश्चंस काली डिस्कस करबा सी यू एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग टुमारो थैंक यू सो मच करेक्ट